Dheeraj, can we start the class? Dheeraj, should we start the class or wait for the people to join? Dheeraj, is, is it audible? Hello. Dheeraj, is it audible? Can we, s- should we start the class? Yes, sir. Uh, okay. Okay, we will do some question regarding week 9 content and week 8 content. So these type of questions will be asked uh, in the final exam also. So so we will do it in this manner only as we are doing from the previous classes. You try to answer the question, take you like 2 minutes and try to answer the question, and then we will see the solution. So the first question is X. Today in today's class, we don't have numericals um, because there is no. We have one or two numericals. Mostly are MCQ questions only. So the first question is excess air combustion of solid waste is done for which of the following purpose? To increase the uniformity of heat in the combustion chamber. So the question is asking when we are doing incineration, so we pump excess air in the chamber. So that excess air pumping is done for what reason? So first is to increase the uniformity of heat in the combustion chamber, to decrease the heat in the combustion chamber, to ensure that complete combustion occurs, and none of these. So which of the option is correct? You can type in the comment box also answer. So the correct answer for the first first is Dheeraj, do you have any answer for this? Okay, so the correct answer for this is to ensure that complete combustion occurs. Because if we need to have excess supply of air for complete combustion occur, because inside the incineration chamber there become some there pockets. There are some pockets where air doesn't reach, sufficient amount of air doesn't reach, and then incomplete combustion will happen. So we need to provide excess air so that complete combustion is happening in the chamber. Otherwise, inlet of air, if it's not preheated, it might reduce the temperature of the system, but that is not the thing which we need. So the normally excess air is provided to ensure that complete combustion occurs. So let's moving on to second question. Second question is leachate is colored liquid that comes out of. This is a very easy question. You can answer. Dheeraj, you can answer. Uh, Where do we get leachate from? Septic tank, sanitary landfill, compost plant, aerated lagoons.
So the correct answer for this question is sanitary landfill. We get leached from sanitary landfill. So let me, okay, sanitary landfill. So, um, okay, I will explain it in the next question. Next question is, which of the following isn't one of the four phases of combustion? So, what are the four phases of combustion? And one of the option is not included in the four phases of combustion. So, um, which one of the option is not the four phases of combustion? Mm, So C is the correct answer. So what are the different phases of combustion? We have first is when we dry the waste. First is drying of the waste. Second, we can see here also the phase one is the drying of the drying phase where the moisture is driven off and temperature reaches up to 150 degrees Celsius. Phase two is volatilization of vapors and gases. So B option is also there, which is combustible volatile organisms diffuse out when their flash point occurs, which is happens between 150 to 700 degrees Celsius. The phase three is burn down of solids, happens between 700 degrees Celsius to 1100 degrees Celsius. And phase four is final burn down of char. So in out of these four, the C option, which is condensation of vapors to liquid oil, is not there. So the option C is the correct answer. Next question is, fixed hearth incineration is a stationary and rotary clean incinerator is rotary. And the reason given is fixed hearth consists single chamber and the rotary kiln has two chambers. So which of the options are correct, and is the reason is actual reason of the assertion? See, uh, so first option is fixed hearth incinerator is stationary and rotary kiln incinerator is rotatory. So first option is correct. First, the first assertion statement is correct. So that means D can't be the answer, E can't be the answer. And fixed hearth consists of single chamber. That is also true. And rotary kiln has two chambers. So reason is also true. But the reason statement is not the correct explanation for the assertion.
So the correct answer for this is option B. Option B is the correct answer. Next question is, flue gas from incinerator stack may include which of the following gases? Answer this question. Flue gas from the incinerator stack may include which of the following gases? We have options like hydrogen sulfide, CO2, carbon monoxide, mercury, or all of the above. Do you have any answer? D. Yeah. D is the correct answer, all of the above. We can see the solution also. So from the stack gas emission, different contaminants we get is particulate matter, PM10, PM2.5, and we get acid gases, particularly H2S, hydrogen sulfide, and CO2. Then we have nitrogen oxides, which is NON and NO2 react to form smoke, cause acid rain. Then we have acid rain, nitric acid formation because of that. And fourth is carbon monoxide, a weak greenhouse gas, and organic hazardous pollutants like uh, PCDD and PCDF. Then we have metal hazardous air pollutants, example mercury. So all of the three H2S, hydrogen sulfide, carbon dioxide, carbon monoxide, mercury will be present in the flue gas of incinerator stack. Next question is, which of the following method is used to handle hazardous and medical waste? So out of these methods, which method is used to handle hazardous and medical waste? There is one further question in this. Can there's some advanced treatment methods also? So which advanced treatment method we can use for medical hazardous and medical waste treatment? So this is easy because options are uh, also answer which of the advanced incineration methods, um, advanced thermal treatment methods uh, can be used for handling of hazardous and medical waste. Name that method.
The correct answer for this is rotary kiln combustion technology. So we can further see here also different treatment methods which are favorable or for particular treatment. So for rotary kiln is specifically more favorable for hazardous and medical waste. It is rarely used for MSW treatment, and we have other treatments like conventional combustion or mass burning, which is most commonly used method. Then we have fluidized bed, which is specifically used for specialty application like wood and coal burning. So I asked one more question whether in advanced treatment thermal treatment methods like we have also have plasma arc method, which is uh, which can be used for the treatment of hazardous and medical waste, because in plasma arc method there is complete mineralization of whatever component we have. So next question is, which of the following technology is used for the removal of SO2 from the flue gas of the incinerator plant? So do we have any answers? No. So we have, which of the following technology is used for the removal of SO2 from flue gas of the incinerator plant? So we have cyclone separators. Cyclone separators are normally used for the removal of particulate matter. Then we have houses. Then we have scrubber or electrostatic precipitator. Electrostatic precipitator for charged particle. And bag house again is for particulate matter. And then we have scrubbers. So dry scrubbers are used for SO2 removal. We can also see some explanation here. So bag house or fabric filter are normally used for the removal of particulate matter. And then we have dry scrubber for SO2 and acid gas control. And for NOx control, we have injected ammonia. So for this, correct answer is dry scrubber, option C. Next question is, which of the following is not an advanced thermal treatment technique of solid waste?
Do we have answer for this question? Do we have answer for this question? Which of the following is not an advanced thermal treatment technique of solid waste? B is not the correct answer. Pyrolysis is an advanced thermal treatment method. In pyrolysis, basically, we crack down the organic molecules because of high heat. So we don't use oxygen in pyrolysis. Pyrolysis is a advanced thermal treatment method. Any other option? A gasification is also advanced treatment method. Gasification is basically a combination of pyrolysis plus combustion, because in gasification there is slight supply of air. There will be some oxygen there. So it will be like gasification, you have pyrolysis, slight little bit of pyrolysis, there's syngas formation, as well as there will be some level of combustion also. Gasification is also advanced thermal treatment technique. Any other option? Option C is also not correct. Plasma system is is also advanced thermal treatment method. Plasma system actually works at around 2000 to 6000 degrees Celsius temperature, and there's complete ionization of the gas. So whatever contaminant you put, it atomizes the molecules present. Correct answer is mass burning only. Next question is, uh, state the following statement, true or false. Non-perishable ash is ash generated from the incinerator which does not decay over time. Is it correct statement or not? Other people other than Dheeraj wants to answer the question. So
filterable as ash in the ash generated from the incinerator, which does not decay over time. It is the correct statement. It is the meaning of non-perishable actually means that it does not decay over time. We can also see the definition that non this just means this does not go rapid decomposition. So the correct answer for this question is true. Next question is the volume is the assertion reason. Uh, the assertion is the volume of solid waste remains intact after the incineration. So first statement is we have some amount of solid waste which remains in the incineration chamber after incineration is complete. The second reason is incineration is one of the waste to energy method of solid waste management. So which of the statement is correct, or the reason is the correct reason for the assertion? D. Both A and R are false. No, D is A is false, R is true. Yeah, D is correct. D is correct. Uh, and, do you want to give any justification for your answer? The person who answered D, do you want to give any justification? Like why I can like I may ask you that in incinerator maybe there might be some places where sufficient amount of air or temperature doesn't get and some amount of waste doesn't get properly burned. Actually, the acceleration A is saying that the volume of the waste remains intact. But in acceleration, actually, there is a huge reduction of volume of the waste. Yeah. And second is incineration. In waste to energy plant, incineration is being done. So what is like how much volume reduction we get after incineration? Usually, you see, in incineration, normally, say 10 to maybe 10 to 12% ash remains, and the rest all is either it is burnt or it is the moisture is evaporated. Moisture is evaporated in the first step where we have temperature to around 150 degrees Celsius. Yeah, it's only the Oh, ash okay. portion remains, Yeah, which is because of the inert. inert nature. Yeah. Okay. So D is correct. Next question is in a double liner landfill system, what is the thickness of compacted clay layer? I think 3 feet. I think. Yeah, 3 feet. 3 feet is correct. So now I can draw the so above the above layer we have compacted soil, and then we have in between we have geomembrane. Then again we have a bottom layer of clay.
So this layer is basically clay, which is around 3 feet for double liner, and for clay we know the permeability is very low. It is around. It is lower than. And do anyone remember the coefficient of permeability for the clay? Exact figure is not. Mm, for clay, it is less than 10 ki power minus 7 centimeters per second. Okay. And the above layer we have permeable layers, which has thickness around 2, I think. 2 feet. Yeah, and then we have geomembrane. So this is for single liner system. For double liner system, we have one more layer in between, which is geonets. So geonet layer, we have one more layer, geonets. So geonets basically is for the detection of if there is any leakage beyond geomembrane, and it allows a lateral movement, like movement of leachate in the lateral direction. Okay, towards the collection pipe. Yeah, if there is any leakage, then you can transfer that leakage in the lateral direction towards the collection. Next question is process of heating the solid waste and splitting its organic substance by thermal cracking and condensation is called. Cracking. Is it pyrolysis? Pyrolysis. So what is the like basic difference between gasification and pyrolysis? In gasification, all the materials they are found transformed into that same gas. Syngas. And in pyrolysis? Pyrolysis, uh, matlab, the molecules they immediately they break down actually, and Char formation is there. So yeah, in some char formation is yeah, there. so pyrolysis is basically there's no air. If there's no air, there's no oxygen. Yeah, air is not there, right? Yeah. So Absolutely in right. pyrolysis, organic matter just breaks down uh, just because of temperature. There is no combustion in pyrolysis. But in gasification, there is combustion. But that combustion is incomplete, so normally syngas formation is there, which is carbon monoxide and hydrogen. So, I've written here, pyrolysis basically, we have destructive distillation of carbon-based material with heat in the absence of oxygen into gaseous product, char, condensable liquid. And the second is for pulverization, basically presence the process of pressing and crushing something until it's become powder of soft mass is pulverization. Definition gasification is a combination of pyrolysis and combustion, sort of. It's not complete combustion because air is we don't provide excess air. It is very limited amount of air. Right. So next question is this. An ideal incinerator, the combustion temperature ranges from It's 300 to 500, 300 to 500 nahi. 300 to 500 nahi, say. 5 to 7, 5 to 7. 300 से around 150 से 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो भी वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं वो इवेपोरेट होते हैं अपने मिक्सचर से, और 150 डिग्री सेल्सियस पे केवल मॉइस्चर अपना कंटेंट रिमूव होता है, मतलब ड्राई हीटिंग जो 4 स्टेप प्रोसेस है
तो अपना जो फेज वन है वो है जब अपन ड्राई मटेरियल अपन को चाहिए होता है, तो उसमें 150 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है, अराउंड वन द टेम्परेचर रीचेज अराउंड 150 डिग्री सेल्सियस, सो द सॉलिड waste get dried. And then second step is from 150 to 700 degrees Celsius. Around that temperature, the all the volatile compounds present in VOCs present in the uh, solid waste get converted, comes into gaseous state. Beyond 700 degrees Celsius temperature, there will be um, there will be some burning of the remaining compounds. And then beyond 700, there is burning of char. So let me, yeah, the four-step process. So first step is the dry phase is moisture is driven off around 150 degrees Celsius. And then we have the phase two where volatilization of vapors and gases. Combustible volatile organic that diffuses out. And this happens around 150 to 700 degrees Celsius temperature. Then phase three we have burn downs of solids when we increase the temperature further beyond 700 degrees Celsius. The remaining fixed carbon volatile materials get oxidized in between 700 to 1100 degrees Celsius. And then we have phase four where final burn down happens. So based on these temperature ranges, what do you think what will be the correct answer? Based on these four phases explanation. I think phase two will be there, but the answer can be 3 to 5 or 5 to 7 also. 5 to 7, 500 to 700. Well, actually, installation, the burning starts around this, as you said, now after 150 degrees Celsius. 150 So degrees maybe the Celsius suitable volatile. range for Yeah, insulator, actually, we consider it as below that uh, what you say, gasification, or that gasification normally happens after, I think, 700 or beyond 700 degrees 700. Celsius. Yeah, Yeah, so insulation we can have either maybe B or maybe C. we can have incineration like in 300 to 500, but we will won't get the complete combustion Complete of the burning will material. not be there. So here he is asking the ideal temperature. So if So we then see C, for, yeah, C will be there, I think, 5 to 7, the 500 to 7. D should be the answer and for ideal, no? Because just for the नहीं, gasification भी burning installation down, का process में आएगा क्या? yeah, नहीं वो 500 to 700 to 900 डिग्री सेल्सियस गैसिफिकेशन के लिए हम जाते हैं। हाँ, अगर उसके भी माइक्रो डिटेल्स में जाए कि कंप्लीट गैसिफिकेशन किस टेम्परेचर पे हो रहा है आइडियल केस में, तो इसमें तो जो केवल अपने पास फोर फेजेस हैं उसके हिसाब से जो रेंज है मतलब 700, कुछ मटेरियल 700 पे हो जा रहे हैं, सॉलिड मटेरियल बर्न डाउन हो जा रहे हैं, कुछ के लिए 1100 जाना पड़ रहा है। तो एक अगर हम आइडियली नहीं देखें, कुछ मटेरियल्स इंसिनरेशन के बाद भी बच जा रहे हैं जो कंप्लीट मतलब कंबशन नहीं हो रहा है, वो देखें वो then एक्चुअली एक्चुअली क्या वर्क कर रहा है साइट पे, उसको छोड़ के आइडियल कंडीशन में वैसे देखें तो यहाँ पे मतलब 800 से 1100 जो ऑप्शन है उसमें वो ज़्यादा सुटेबल लगता है। हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री में जैसे वो लाइम किलन में हाँ वी उसमें बर्न तो कोल 1500, एंड लाइम, 1500 तक जाता है टेम्परेचर क्लीन में तो तो रोटरी। वो हम इंसुलेटर टाइप का कैटेगरी में रहेगा क्या? वहां पे तो अपन जो अपना कैल्शियम ऑक्साइड है और जो भी एजिलेसियस और कैल्सिलेसियस मटेरियल्स हैं उनको हम बर्न कर रहे हैं फ्यूजन के लिए, वहां पे तो मुझे नहीं लगता कि हम एयर प्रोवाइड करा रहे हैं रोटरी प्लेन में। हम्म, नहीं, डी डी ठीक है,
उस हिसाब से देखा because we are trying to supply this our RDF material into cement kiln जी where we say that the burning will take place at around 900 degrees centigrade. या So the complete portion will be burnt off. Nothing will be left in the लग atmosphere. ओके So yeah, D is okay. Next question is, what does the turbulence in three T's of combustion represent? We can also discuss what are the three T's. We any, any somebody answered A, turbulence, yeah. It, So 3D answer is A. it was related to temperature, I think. No, this is for like turbulence. What is the turbulence in three T? We have three T's. So temperature is also there, but here he is asking about specifically about turbulence. Okay. We have like in three T's, there's a triangle of fire. We have temperature, turbulence, and time. The turbulence is specifically for mixing of waste material with air. Oh, It so happens that in the uh, some in the incineration chamber or in where your burning is happening, if we don't have excess supply of air, sometimes at some places sufficient amount of air doesn't reach. So incomplete burning happens. So we need turbulence, air turbulence, so that air is continuously supplied to every can corner of the incinerator. Like all the material which we are burning has get sufficient amount of air for combustion. So apart from temperature, like we need a specific temperature that we just discussed. And then we need sufficient amount of time also. Then we need certain turbulence. mixing. Yeah, turbulence will give mixing. Next question is, which of the following statement is not true for the solid residue generated during thermal treatment of waste? The D, I think the 25% S is very high. 25% S is high, but this is like for the option we have एक in एक ये भी this. है कि D मतलब We less cannot be used in construction हाँ material. हाँ ash from the conventional combustion cannot be used as a construction material. ये ये स्टेटमेंट ज्यादा गलत है, लेकिन ये भी मतलब हम क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब
आप कोई रीजन बता सकते हैं कि हम बी स्टेटमेंट को भी क्वेश्चन करें कि बी बी एक्चुअली आजकल कुछ फ्लाई एश ब्रिक्स वगैरह बनाने में थोड़ा बहुत यूज होने लगा है। और हाँ, फ्लाई ऐश, ये लेकिन फ्लाई ऐश तो एक मतलब अपना एक आर्जिलेसिस मटेरियल मतलब सिलिका एल्युमिनियम की प्रेजेंट है, और मतलब एज अ सीमेंटियस मटेरियल काम करता है। आपने बहुत सारा सीमेंट भी बनता है पहले से, एज अ पोजोलॉनिक मटेरियल यूज कर सकते हैं। मतलब ये से अपना सीमेंट में जो सी एस एच जेल बन फॉर्मेशन होता है वो भी बनाता है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। वो सब चीज़ें अपने हैं, जैसे वो उसकी वजह से अपन आंसर दे रहे हैं कि कन्वेंशनल जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन मतलब कुछ इसका अगेंस्ट स्टेटमेंट भी हो सकता है इसके अगेंस्ट की कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह यूज नहीं होना चाहिए, मतलब इंसिनरेटर से जो ऐश निकल रहा है। क्योंकि ये जो बॉटम एज जनरेटेड अगर 25% से हाई रहेगा तो आई डोंट को कोई भी चीज के अंदर कोई भी चीज वाइबल होगा अगर उसका 25% मतलब वेस्ट जनरेट हो रहा हो उसमें से। बॉटम ऐश जनरेटेड बाय वेट टोटल वेज कंबस्टेड, इसमें इसमें आप 25% से ज़्यादा तो हो सकता है इसमें। बॉटम ऐश जनरेटेड बहुत, ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज है वैसे तो बहुत ज्यादा नॉर्मली। परसेंटेज हाँ। एक्चुअली। कहीं पे भी वाइबिलिटी नहीं आएगा इसका अगर हाँ। मान लो कोई भी प्रोसेस में। हम्म, ठीक है। ये इसके अलावा जो बी वाला जो ऑप्शन है, इसके लिए हम कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि नहीं यूज होना चाहिए, मतलब नहीं, ऐसा कुछ। कुछ नहीं है। आजकल बहुत सारा जगह पे यूज होने लग गया है ये। हम्म, जैसे मान लो हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन करें या फिर कुछ ऐसा, तो साइड के बंड वगैरह के फिलिंग में और जैसे ब्रिक्स का जैसे बताया कई कई जगह पे आजकल यूज हो रहा है ये वाला मटेरियल। इवन जैसे आप बताए सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी तो इसको एस को यूज कर ही हम्म। सकता है। हाँ, पीपीसी सीमेंट बनता है, पोजोलाना सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। मेरा मेरा आर्ग्यूमेंट बस इतना है कि जैसे अपना जो ऐश निकलता है उसमें, बॉटम ऐश में कई बार हैवी मेटल्स हो सकते हैं। हाँ, नहीं, थोड़ा डाइल्यूट फॉर्म में यूज होगा तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, मतलब जो ऑप्शन है उसके लिए। जो लीच हो मतलब बाद में। वो है एक, लेकिन मतलब थोड़ा सा डाइल्यूशन रहेगा, मतलब वो कोई मेजर क्वांटिटी में यूज होगा तो होना नहीं चाहिए। ठीक, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर अगला है, विच मॉडल इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द लैंडफिल लीचेड जनरेशन। बी है हाइड्रोलॉजिक इवोल्यूशन ऑफ लैंडफिल परफॉर्मेंस, लीचेट वाटर कैलकुलेशन के लिए। हाँ, बी सही है। हेल्प मॉडल, शॉर्ट फॉर्म हेल्प नाम से है, सर ने ये अपने नोट्स में पढ़ा है, हाइड्रोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ लैंडफिल परफॉर्मेंस। अगला क्वेश्चन है, which of the following is the most important property of GeoNet that helps in collection इसका of बी lead? है ट्रांसमिबिलिटी, जो ओरिजेंटल डायरेक्शन में जो डिस्कस कर हाँ, रहे थे कुछ देर पहले। इसका मैं थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ। ना, इस तरह का वो कुछ होता है अपना, जैसे ये अपने लीचेड लीचेड का स्लोप है, जो नसेल का जो बॉटम सरफेस होगा उसका स्लोप होगा अराउंड 2 to 8% स्लोप होगा। स्लोप होके एक डिच टाइप उसमें जाएगा, जो यहाँ पे फिर अपना सैंड होगा,
जो यहाँ पे सैंड भरा हुआ होगा, यहाँ पे सैंड पार्टिकल होंगे अपने और यहाँ पे ही अपना कलेक्शन पाइप जो होगा, इस जो यहाँ पाइप होगा सैंड। उसके आसपास। उसके हाँ आसपास में एक कोर्स सैंड रहेगा जो जियो टेक्सटाइल से कवर रहता है। हाँ, उसको जियो टेक्सटाइल से कवर रहेगा, तो वो बेसिकली जो स्लशी मटेरियल है उसको अलाउ नहीं करेगा, केवल अपना लिक्विड उसके थ्रू पास होगा। और लीचेट को। हाँ, लीचेट लीचेट उसके थ्रू पास होगा और अपने सैंड मटेरियल पाइप कलेक्ट करेगा और उसको लेटरल डायरेक्शन में बाहर की तरफ लीचेट कलेक्शन वेल में लेके आ जाएगा। तो जियो नेट्स बेसिकली, मतलब ये जो हमने डबल लेयर वाला ऊपर डिस्कस किया था यहाँ पे, तो जियोनेट मटेरियल हम यूज करते हैं जो लेटरल डायरेक्शन में, या लेटरल डायरेक्शन में बेसिकली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है मूवमेंट पानी का अलाउ करता है, लीचेट का मूवमेंट। तो इसके लिए इसमें बी आंसर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, विच इज द टिपिकल रेंज ऑफ प्रेफर्ड स्लोप ऑफ लाइनर इन लीचेट कलेक्शन सिस्टम ऑफ अ लैंडफिल। जो 2 to 3% के आसपास ही था। 2 to 3%। 2% अपर लिमिट तो है, 2%। वही 2 से 8% होता है। वही यहाँ पे जो ये वाला सरफेस होता है, हाँ। प्रीवियस क्वेश्चन में जो स्लोप 2 से 8% के करीब होता है। ये बीओडी स्टेबलाइज इन विच फेज ऑफ द लैंडफिल स्टेबलाइजेशन स्टेज। ये तो एसिडिक एसिडिक फेज के बाद में स्टेबलाइज होना शुरू हो जाता है जब मीथेन जनरेशन स्टार्ट होता है। हम्म, कौन सा वाला करेक्ट होगा? इन विच स्टेज। हाँ, इसका अगर हम डायग्राम बना के देखें, ये मीथेन फॉर्मिंग में आएगा एक्चुअली, एसिड के बाद में स्टार्ट होता है इसका स्टेबलाइजेशन। एसिड के बाद में स्टार्ट है। तो इसमें देख लेते हैं। हाँ, ये एक डायग्राम था, हम लोगों ने बहुत पहले देखा था, जो क्या बीओडी और कंसंट्रेशन दोनों इनिशियली इंक्रीज होता है हाँ, और फिर वो लोग डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये मतलब इस तरीके से चलता है अपना। इनिशियली तो राइट। प्राइमरी एरोबिक फेज हो गया, यहाँ यहाँ से लगभग, फिर उसके बाद एसिड फॉर्मिंग आ जाता है यहाँ एसिडिक। तक, इस स्टेज तक। फिर यहाँ से मीथेन फॉर्मिंग फेज स्टार्ट होता है और बीओडी अपना रिडक्शन पे चले जाता है। तो मीथेन फॉर्मिंग जो है वो फेज होगा जिसमें अपना लैंडफिल स्टेबलाइजेशन से। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग लैंडफिल एज टू द लीचर टाइप द लैंड।
सी वाला है, कौन सा? सी 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 ए बी सी। सी सी हाँ, सी करेक्ट है, हाँ सी करेक्ट है। बायोडिग्रेडेबल यस यस। बायोडिग्रेडेशन इनिशियली सबसे पहले होता है, तो वो लेस देन 5 years में कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड अपना इंटरमीडिएट स्टेज होगा जो कि 5 to 10, फिर आखिरी में अपना स्टेबलाइजेशन होता है जो ग्रेटर देन 10 years जो लगता है। सेम अपना इसका भी डायग्राम अपन को इनिशियली फर्स्ट स्लाइड्स में दे रखा था, तो उसके लिए आंसर अपना सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन टू फ्लेयर द लैंपिडस? Primary reason to minimize the impact of a greenhouse emission. मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, हाँ सही है, पर क्यों है ये सही? Primary reason to इसको फ्लेयर कर देने से जो मीथेन है वो ब्रेक हो जाएगा इसमें, CO2 और पर उससे ग्रीन हाउस एमिशन में क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब मीथेन, CO2 भी तो ग्रीन हाउस गैस है। हाँ, हम सारा मेजरमेंट CO2 के इक्विवेलेंट में ही करते हैं। CO2 कन्वर्ट होगा CO2 CH4 सॉरी CH4 प्लस O2 कन्वर्ट हो जाएगा अपना। तो लेकिन इस कन्वर्जन में अपना मीथेन जो है वो भी ग्रीन हाउस गैस है और CO2 भी ग्रीन हाउस गैस है। पर CO2 फिर भी उससे मीथेन से थोड़ा कंपैरेटिवली लेस वो है। कंपैरेटिवली लेस मतलब क्या प्रॉपर्टी है CO2 की जो मतलब मीथेन को ज्यादा हार्मफुल बनाती है CO2 से? मतलब हम CO2 प्लस H2O भी आएगा ना इसमें।
हाँ हाँ, वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, वो आएगा। वो रिएक्शन फिर बैलेंस करनी पड़ेगी। ये इसमें आपने रिक्वायरमेंट इसी चीज़ के इसलिए लिखा है। हाँ हाँ। इसमें मतलब इसमें ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो होता है, जो अपन देख रहे हैं बेसिकली हीट ट्रैपिंग एबिलिटी होती है। तो CO2 भी हीट ट्रैप करता है, मीथेन भी हीट ट्रैप करता है, लेकिन मीथेन कंपैरेटिवली 25 टाइम्स मोर ज़्यादा हीट ट्रैप कर सकता है। अगर हम मॉलिक्यूल टू ओ, मॉलिक्यूल बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की टर्म्स में डिफाइन करते हैं हम इसको। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मीथेन की 25 टाइम्स ज़्यादा होती है ऑलमोस्ट CO2 के। लेकिन हम सारा मेजरमेंट CO2 की टर्म्स में करते हैं, क्योंकि CO2 मतलब मेजर, अगर अमाउंट में देखें, अमाउंट की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ CO2 एमिशंस की वजह से मीथेन और बाकी जो अपने और गैसेस हैं। और कौन कौन से गैसेस हैं ग्रीन हाउस गैसेस मीथेन के अलावा, मीथेन CO2 के अलावा? ग्रीन हाउस। अपने तीन तीन गैसेस तो इसी इक्वेशन में है। इसी इक्वेशन में तीन गैसेस हैं, CO2 है, मीथेन है और एक और गैस है। CO2 मीथेन। CO2 और मीथेन तो अपना ग्रीन हाउस गैस है ही। उसके अलावा O2 और H2O में से भी एक गैस होता है जो ग्रीन हाउस गैस है। इसमें एक हाइड्रो H2S हाँ सल्फर वेपर, वाला भी एक हाँ प्रोडक्ट आता है। वाटर वेपर होता है, वो अपने ग्रीन हाउस गैस होता है। इसके अलावा अपना HFCs हो गए। CFCs ग्रीन हाउस गैस होते हैं या नहीं होते हैं? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC नहीं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। हाँ, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन अपने ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। और इनकी एबिलिटी होती है काफ़ी, मतलब हज़ारों टाइम्स होती है एज कम्पेयर टू CO2। फिर अपना SF6 होता है। HS। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। वो अच्छा, वो वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है। मतलब मतलब उसकी ये कैपेस सारे भी लैंडफिल में जनरेट होते हैं। ये लैंडफिल में जनरेट नहीं होते, ये ग्रीन हाउस गैसेस है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेज। ओके। गैसेस हैं जो मेजरली अपने जो प्रोमिनेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इसके अलावा एक और नाइट्रोजन का भी एक गैस ऑक्साइड होता है जो ग्रीन हाउस गैस की तरह हाँ, बिहेव ये करता है। दिखा रहा है तुम। सेवन सेवन गेसेस आर देयर एज पर Kyoto प्रोटोकॉल। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाँ। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, एक पर फ्लोरोकार्बन भी है, TFC, हम्म। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और हाँ नाइट्रोजन वो ट्राइफ्लोराइड। फ्लोरीन के जितने भी फ्लोरीन के कंपाउंड जो हैं, जैसे SF6 हो गया, HFC हो गया, तो फ्लोरीन के गैसेस जो हैं वो मोस्ट मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें।
Let other people learn. Let's wait for 2 minutes. फिर अगला क्वेश्चन है अपना, which of the following is which of the following is not a property of landfill gas? स्क्रीन नहीं विजिबल है। अच्छा स्पीकर मैं, से। हाँ शेयर, एक मिनट, शेयर नहीं हुआ, एक मिनट बताता हूँ। लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लैंडफिल गैस? अभी सर स्क्रीन दिख रहा है अभी, प्रेजेंटेशन? टॉक्सिक हो सकता है। हाँ हाँ, अभी अभी दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है। अपन जैसे यहाँ पे जो दिल्ली में जो हेलो लैंडफिल साइट, दिल्ली, जी हेलो। जी जी जी, अब हेलो सर, प्रेजेंटेशन ये विजिबल है मतलब? हेलो, जब भी हम मतलब कहीं कचरे का ढेर लैंडफिल साइट है अपने उधर से गुजरते हैं, तो कौन कौन सी चीजें हैं मतलब हम आउटराइट ऑब्जर्व कर सकते हैं सीधे? और गैस जो है वो मिक्सचर है कई और गैसेस। जी सर। डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, यू डी इज करेक्ट आंसर। मनु सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑर्डरलेस है। डी। हाँ ठीक है, ऑर्डरलेस इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है अभी अभी आ रही है आवाज? इस
हाँ, हाँ अभी आ सर, रही है। आवाज तो आवाज आ रही है सर, हाँ। लेकिन बहुत हल्की आ रही है। अच्छा, एक मिनट। हाँ। हेलो, अब अभी आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है, आ रहा है। हाँ, ये सवाल, नेक्स्ट सवाल। Calculate the landfill capacity if the solid waste is accepted at the rate of 15 tons per day. The density of the waste in the landfill is and the volume is सीधा सीधा सवाल है, डेंसिटी या tons वॉल्यूम 15 टन पर डे है ना? 15 tons per day. 20 साल होगा। 20 300 साल। डिवाइड बाई 15। हाँ, 20 साल। सॉल्यूशन इसका होगा अपना 15 टन 15 इंटू 1000, 15,000 केजी पर डे आ रहा है। यहाँ से वॉल्यूम 365 से डिवाइड कर देंगे तो इंटू वॉल्यूम आ थ्री जाएगा, सिक्सटी फाइव डेज। डिवाइडेड बाय 365 वॉल्यूम आ जाएगा। और डेंसिटी भी 365 है, तो वो कैंसिल होके और कैंस 3 लाख हाँ डिवाइडेड बाई 15,000। हाँ, 20 साल इसका सीधे आंसर आ जाएगा। सॉल्व सॉल्व करना है किसी के लिए, किसी मतलब किसी को आंसर नहीं आया तो सॉल्व करना है। सर ये एक बार रिपीट कर दें, हमारा छूट गया है। जी जी जी, मैं कर देता हूँ। 15 टन मतलब लैंडफिल की कैपेसिटी, मतलब कितने साल तक चल जाएगा वो अपन को निकालना है, और इसमें पर डे कितना वेस्ट आएगा वो दे रखा है। तो 15 टन पर डे वेस्ट आ रहा है, तो 15 टन का मतलब 15,000 केजी वेस्ट हर दिन जनरेट हो रहा है। और हमको ओके। डेंसिटी दे रखी है, जो वेस्ट जो है, भले ही जहाँ जनरेट हो रहा है वहाँ कुछ भी डेंसिटी हो, लेकिन जब लैंडफिल पे पहुंच रहा है तो वहां पे डेंसिटी 365 केजी पर मीटर क्यूब है। ओके। ठीक है, तो अपन 15,000 केजी जो अपना वेस्ट है, 15,000 केजी पर डे जनरेट हो रहा है। उस अगर आप 365 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीटर क्यूब पर डे में आ जाएगा। ओके। मीटर क्यूब पर डे में एक वैल्यू आ जाएगी जो कि रिप्रेजेंट कर रही है ओके। कि एक दिन में कितना वॉल्यूम कवर हो जाएगा। जी जी। जी। फिर ये 3 लाख जो ये एम क्यूब है, हाँ हाँ, उसको उससे डिवाइड करेंगे तो उससे ईयर बन जाएगा। हाँ उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका दिन में आंसर आ जाएगा कि इतने दिन इतने दिन चल जाएगा लैंडफिल साइट। अब उस दिन को आप ओके। ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए। यानी देन फर्दर डिवाइडेड बाई 365। हाँ हाँ, जी। तो वहां से आपका आंसर आ ओके। जाएगा। सर इसका आई सर एम एक्चुअली एक्चुअली अभी जो लास्ट वाला जो वीक का जो था मॉड्यूल, उसमें 44 थे कौन सा, उसमें सर ने एक फॉर्मूला दिखाया था लैंडफिल कैपेसिटी का। हाँ। लैंडफिल कैपेसिटी इज इक्वल टू लैंडफिल वॉल्यूम एम क्यूब में आएगा इनटू वेस्ट डेंसिटी टन्स पर टन्स पर एम क्यूब, और डिवाइडेड बाय वेस्ट फिलिंग रेट दैट इज टन्स पर ईयर। हम्म सर, इसमें अब यानी थ्री। फॉर्मूला फॉर्मूला याद करने की जरूरत है नहीं, अपनी नॉर्मल कैलकुलेशन है तो फॉर्मूला हाँ, वो हम। नॉर्मली है। हाँ जस्ट मैंने कुछ देर पहले ही वो वीडियो देख रहा था मैं, हाँ, तो जस्ट आई रिमेम्बर।
फॉर्मूला में आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये अपना नॉर्मल जनरल एप्टीट्यूड का तरह का सवाल है। मतलब ऐसे ही अगर थोड़ा विजुअलाइज कर लेंगे कि एक दिन में 15 टन वेस्ट हो रहा है, डेंसिटी दे रखी नहीं, है तो फॉर्मूला का याद करने का जरूरत हाँ नहीं है इसमें। एक्चुअली हाँ जैसे एम क्यूब में वॉल्यूम दिया है ना, हाँ और आपका डेंसिटी दिया हुआ है, तो वॉल्यूम और डेंसिटी मल्टीप्लाई करने पे हमको टोटल वेस्ट आ जाएगा। जी कितना कितना आपका केजी का वेस्ट है, और उसको हमको फिर डिवाइड कर देना है। जो अभी ये जो दिया है 15 टन पर डे है, तो 15 टन इंटू 1000 इंटू 365 से डिवाइड कर देंगे तो हमको ये कैपेसिटी मिल जाएगा ईयर में। जी। हाँ, तो ये इसका मतलब आपका एग्जैक्ट 20 साल बन जाएगा आंसर, आप सॉल्व करके देखेंगे तो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शुड नॉट बी ऑप्टेड इन एब्सेंस ऑफ एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एट अ लैंडफिल साइट? should not be obtained. ये बी वाला आएगा, डिस्पोज ऑफ टू द नियर बाई लेक फॉर डाइल्यूशन। अपने पास ऑप्शन डी, बी सही है। जो अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास वो है कि मास इवेपोरेशन में हमको कोई नुकसान होगा क्या, जो भी। अब इसमें कंडीशन ये है कि मास इवेपोरेशन आप कर रहे हो तो जो बेस है, जो भी पॉन्ड है उसका बेस है वो उसमें परकोलेशन नहीं होना चाहिए नीचे की तरफ। तो लाइनर वगैरह रहना होगा। हाँ, लाइनर मटेरियल होना चाहिए, तो उसमें मास इवेपोरेशन होगा तो पानी उड़ जाएगा अपना, जो भी कंटेमिनेंट उसके अलावा है वो आपके लाइनर के ऊपर बच जाएंगे, तो इसमें बाकी कंटेमिनेशन नहीं हो रहा है ये सॉय आपका लैंड का ना ये पानी का। डिस्पोज ऑफ अगर आप नियर बाय लेक में कर दे तो डाइल्यूशन तो हो जाएगा, लेकिन अभी लेक कंटेमिनेट हो जाएगी, और लेक जो होता है उसका बेस से पानी फिर नीचे ग्राउंड वाटर में भी परकोलेट करेगा, तो इसमें आपके फिर कंटेमिनेशन होगा एक्वेटिक लाइफ, और साथ साथ में ग्राउंड वाटर में जाएगा तो फिर कई लोग ग्राउंड वाटर सीधा पीते भी हैं, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स काफ़ी प्रेजेंट होते हैं इसमें, तो वो प्रॉब्लम करेगा फिर। एरेशन इन लाइन लगून, ये तो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट है ही। और हॉल्ड ओवर ईटीवी यूजिंग पाइपलाइन, ये तो फिर ये भी एक तरीका है कि ईटीवी प्लांट तक आप ले जाओ। तो इसमें जो आपको नहीं करना है वो ये नहीं करना चाहिए हमको, वो यही है कि सीधे लेक में डिस्पोज ऑफ ना करें। अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज फील्ड कैपेसिटी? व्हाट इज फील्ड कैपेसिटी? ये अपने हाइड्रोलॉजी और सब में टर्म्स पढ़ते हैं, मतलब बेसिकली इरिगेशन में भी आता है, विल्टिंग पॉइंट और फील्ड कैपेसिटी और ये वाली टर्म, जिसमें बेसिकली सॉइल और पानी के इंटरेक्शन की बात हो रही है, मतलब सॉइल कितना पानी होल्ड कर सकती है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी डिफाइन किया, मतलब कितना पानी अपना, एक तो है कि सैचुरेशन है, मतलब सारे वर्ड्स भरे हुए हैं, और वो सब। उसके अलावा फील्ड कैपेसिटी उन टर्म्स में क्या होती है वो है, तो उसकी डेफिनेशन आपको बतानी है, तो कौन सा सही है। डी तो सही आंसर नहीं है इसका। तो सी लग रहा है।
सी है अपना अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट अ गिवन मास ऑफ वेस्ट कैन एब्जॉर्ब प्रायर टू डाउनवर्ड परकोलेशन। यानी एब्जॉर्प्शन का इसमें मतलब वो एब्जॉर्प्शन का वो नहीं है, मतलब इसमें अपना अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट गिवन मास ऑफ वेस्ट कैन डी सॉप, नहीं डी सॉप तो नहीं होना चाहिए, डीस ऑप्शन तो नहीं है इसमें, अपना ये जो डीस ऑप्शन वर्ड दे रखा है वो नहीं है। पानी मतलब होल्ड करने से रिलेटेड है, कितना पानी होल्ड कर रहा है, नॉर्मली सॉइल के रेस्पेक्ट में यूज होता है, यहाँ पे वेस्ट के रेस्पेक्ट में यूज हुआ है। तो मतलब सॉइल के रेस्पेक्ट में मैं एक बार बताता हूँ, फिर आप मतलब एक्सट्रापोलेट करने की कोशिश करना इसमें कि मतलब अगर हम सॉइल जैसे एक ग्राउंड एरिया लें, ग्राउंड एरिया लिया, इसमें इसमें बहुत सारे वॉइड्स हैं, मान लीजिए इसमें बहुत सारे वॉइड्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे वॉइड्स हैं, और आपने ऊपर से पानी, एक जग पानी लिया और पानी डाल दिया ऊपर से। अब यहाँ पे आपने धीरे धीरे पानी डाल दिया, पानी पूरे में जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और नीचे की तरफ से पानी कुछ निकल रहा है, लेकिन जितना जैसे आपने मान लीजिए 5 लीटर पानी डाला, तो नीचे से 5 लीटर पानी नहीं निकला, मान लीजिए 3 लीटर पानी निकला। तो ओके। ये जो जो कुछ पानी जो ग्राउंड ने ये इस छोटे से जो सेक्शन है इसने होल्ड कर लिया है वॉइड्स में, अम, जी। वो अपना फील्ड कैपेसिटी है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, कि मतलब अब इसमें अभी भी जो पानी जो वॉइड्स में है उस पे ग्रेविटी लग रही है, लेकिन उतना अमाउंट 2 लीटर उसकी इस फील्ड की इतनी कैपेसिटी है कि 2 लीटर तक पानी ग्रेविटी के अगेंस्ट भी होल्ड कर सकता है। उस फिर सर ऑप्शन ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए, ए सही होगा सर। हाँ, ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि सर वो मैच कर रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। बी बी सही क्यों नहीं है, बी भी लगभग सेम ही है, क्या मतलब क्या चेंज हो जा रहा है इसमें। बी भी लगभग वैसा ही लिखा हुआ है लगभग, लेकिन बी आंसर हम नहीं ले रहे। ये सर इसमें वैक्यूम प्रेशर लिखा हुआ है एक्चुअली में। हाँ उसमें उसमें सर ग्रेविटेशनल फोर्स है, हाँ सही। ड्यू टू ग्रेविटी हर चीज नीचे की तरफ जाती है, हाँ जी 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 तो बिल्कुल। वैक्यूम का कोई मतलब नहीं है सर। हाँ, वैक्यूम तो यहाँ पे वैसे भी सेंस नहीं बनाता, अपवर्ड मोशन होता भी है अगर पानी में सॉइल में, तो वो कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है। वो कैपिलरी एक्शन होता है सर। जी जी जी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल कन्वर्जन टेक्निक इन्वॉल्व सुपर हीटिंग ऑफ गैस टू एन आयनाइज स्टेट। प्लाज्मा आर्क। प्लाज्मा, प्लाज्मा मतलब ये अपने वैसे ये पायरोलिसिस गैसिफिकेशन अपन ने पहले समझा ही था, कंबशन अपना सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में अपन बर्न कर रहे हैं चीज को, गैसिफिकेशन में आप लिमिटेड एयर दे रहे हो, पायरोलिसिस पायरोलिसिस में नो सप्लाई ऑफ एयर। प्लाज्मा आर्क में मतलब गैस गैस को हाँ हीट जी, किया जाता है। आयोनाइज्ड होती है। हाँ, हीट करते हैं इसको अराउंड 2000 से 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, तो जो भी मटेरियल आप इसके कांटेक्ट में होता था एटमाइज हो जाता था, तो जी, कंप्लीट डी इज करेक्ट। हाँ कंप्लीट मिनरलाइजेशन होता था प्लाज्मा। आर्क मेथड इसका सही है। अगला है which of the following arrangement is used to separate acidogenesis and methanogenesis type of anaerobic digestion।
ये टू स्टेज एरोबिक का सुना था, लेकिन कैसे है वो पता नहीं। टू स्टेज एनारोबिक, ये एनारोबिक डाइजेशन, हाँ ये टू स्टेज एनारोबिक डाइजेस्टर सही है आंसर। पर मतलब एक बार सोच के देखिए मतलब कैसे ठीक हो सकता है। सर वो इसलिए कि इसमें जो दो चीजें हैं ना, ये आपका एस्ट्रोजेनिक जेनेसिस भी है, मेथोजेनेसिस भी है। तो ये मतलब इंडिकेट कर रहा है कि नीडेड टू स्टेज, थोड़ा हिंट मिल रही। अच्छा, कौन कौन से चार स्टेजेस, कौन कौन से चार स्टेप्स होते हैं अपने एनारोबिक डाइजेशन में? एनारोबिक डाइजेशन में कौन कौन से अपने चार स्टेप्स होते हैं? फोर स्टेप प्रोसेस है एनारोबिक डाइजेशन, जिसमें अपना मिथेनोजेनेसिस स्टेप है, जहाँ मिथेन जनरेशन होता है। मतलब एक प्राइमरी एरोबिक है, फिर वो एसिडिक फॉर्मेशन का है, एक मीथेन फॉर्मेशन, और फिर एक वापस एरोबिक आता है, जिसमें वो वो तो लीकेज की वजह से। वो तो शायद आपने ये तो लैंडफिल का वो बता दिया आपने स्टेप, मतलब पहले, हाँ क्योंकि हाँ हवा लगने का वो होता है, क्योंकि कवरिंग नहीं होती तो एरोबिक रहता है। अपना एनारोबिक डाइजेशन स्पेसिफिक प्रोसेस है, जब आपने कवर कर लिया तो एनारोबिक डाइजेशन स्टार्ट होगा। उसमें चार स्टेप होते हैं, अपन ने स्टार्टिंग की क्लासेस में डिस्कस किए, तो उसमें दो तो ऑलरेडी प्रोसेस स्टेप जो है लिखे हुए हैं, एसिडोजेनेसिस एंड मिथेनोजेनेसिस। तो इसके अलावा दो और होते हैं स्टेप्स, जो जिसमें मिथेनोजेनेसिस तो अपना लास्ट स्टेप होता है, जहाँ पे बेसिकली आपका एसिटिक एसिड जो बनता है थर्ड स्टेप में, जिसको हम एसीटोजेनेसिस बोलते हैं। और उसमें जो एसिटिक एसिड होता है वो, उसको मिथेनोजेनेसिस स्टेप में मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं मीथेन गैस में। और मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया टेम्परेचर पीएच सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बैक्टीरिया होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस में, वो होता है अपना हाइड्रोलिसिस। सेकंड स्टेप होता है अपना एसिडोजेनेसिस। थर्ड स्टेप होता है एसीटोजेनेसिस। फोर्थ स्टेप होता है मिथेनोजेनेसिस। तो इसमें राइट। मतलब इस इन दोनों का सेपरेशन का जरूरत ही क्यों पड़ा, मतलब ये सवाल बना ही क्यों, मतलब ये यूज टू सेपरेट सेपरेट क्यों करना है, मतलब ये तो एक ही जो डाइजेशन, एनारोबिक डाइजेशन पूरा प्रोसेस है उसका ही दो स्टेप हैं ये। इनके बीच में एक और होता है एसिटोजेनेसिस स्टेप, लेकिन है तो ये सेम प्रोसेस, मतलब सेपरेट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? रिक्वायरमेंट ही क्यों आ गई, मतलब सेम ही तो प्रोसेस है। पीएच पीएच वेरिएशन वाला वो ग्राफ याद है किसी को, मतलब उसमें इनिशियली कि पीएच कैसे वेरी करता है? पीएच आपका डाउन जाता है, और ये एसिडिक स्टेज के बाद में वो बढ़ के फिर मतलब स्टेबलाइज हो जाता है, कंटिन्यू रीचेट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें। हाँ, तो वो वहां से हम कुछ कोरिलेट कर सकते हैं इसके चार स्टेप को, जो चार। अच्छा, जब ये मीथेन 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 जब फॉर्म होता है, तब आपका जो मतलब पीएच है, ये आपका स्टेबल हो जाता है, मतलब जो लिचेट कैरेक्टरिस्टिक्स है हाँ उसमें। हाँ, पीएच जब तक मतलब उसके अराउंड होना चाहिए, 6-7 के अराउंड पीएच। लेकिन अब मतलब इसमें रीजन यही है कि जो अपने एसिडोजेनेसिस फेज है उसमें जो बैक्टीरिया जो एसिडोजेनेसिस कर रहे हैं, वो मतलब काफी रोबस्ट होते हैं, तो वो लो पीएच में सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि हाँ, एसिडिक एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे सर। हाँ, लेकिन जो वो मिथेनोजेनेसिस मीथेन गैस बैक्टीरिया, प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। जी जी जी, इसलिए इसलिए थोड़ा टू स्टेज एनारोबिक डाइजेशन का जैसा कुछ बात होता है, इसलिए नहीं तो इनिशियली एसिडोजेनिक बैक्टीरिया उस तक पीएच 4-5 पहुंच जाता है, तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया 6 to 7 पीएच रेंज में ही काम करते हैं, उससे नीचे मतलब फिर वो काम नहीं करते। तो इसलिए इस तरह का मतलब कुछ सवाल। टू स्टेज एनारोबिक डाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल।
conceptual composition for characterizing the combustion potential of waste includes। ये अपने वो पाई चार्ट से सवाल है सीधे। ये पाई चार्ट से अपने पाई चार्ट से सवाल है, ए ऑप्शन आंसर है इसका सीधे। फिक्स कार्बन volatile solids inorganics ash and water। हाँ ये न्यूमेरिकल है, ये आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेट द ऑप्शन रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ, तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी मीथेन की और फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो इससे पहले वाला फिर कौन सा आंसर सही था? इससे पहले वाले का ए आंसर सही है। फिक्स कार्बन volatile solids जी बिल्कुल। inorganic ash water। ये अपना हाँ सर, वो एक ए ही लग हाँ, इसमें ये कम लग ठीक फ्लो ठीक ठीक। पाई चार्ट एक बना के दिया था सर ने, कम्बस जो थर्मल ट्रीटमेंट के उसमें। हाँ, विजय सर ने बताया था। जी, ये सवाल न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। CH4 प्लस O2 आएगा ना? हाँ सॉरी, CO2।
ये हमारी बेसिक रिएक्शन है जो होगी। इसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो अपने दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आएंगे। हाँ, यहाँ पे आपका दो हाइड्रोजन आएगा। अब इसमें इस OH2 रिएक्शन हाँ, इस रिएक्शन में हमें पता चल रहा है कि एक एक मोल ऑफ मीथेन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ काम रिएक्ट कर रहा है। तो 1 मोल ऑफ मीथेन का आपका मॉलिक्यूलर मास होगा 16 ग्राम। और ये रिएक्ट कर रहा है आपका ऑक्सीजन का एक एटम का 16, 16 × 2 32, 32 × 2 64, 64 ग्राम, 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 16 ग्राम मीथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो अब यहाँ पे अब सवाल में क्या पूछा एक बार देखिए। यहाँ से मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए, एक बार कोशिश करिए। 400 क्या चीज? 400 आएगा। 400 सही है, हाँ। 400 सही है। 400 सही कैसे है। सर? हाँ, ये बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे अपने सीधा मोल कॉन्सेप्ट अब हम लगाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि ये यहाँ पे लगाया। तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि 16 ग्राम से 64 16 ग्राम मीथेन के लिए 64 ग्राम वो चाहिए, ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन ए ऑक्सीजन हाँ, हाँ, तो अगर मुझे 1 ग्राम के लिए निकालना हो, 1 ग्राम के लिए निकालना हो तो क्या करूंगा मैं? 64, 4 चाहिए, 4 ग्राम चाहिए। 64 / 16। 16 है। हाँ। अब वहीं बीस अगर मुझे ग्राम हो सौ जाएगा। 100 के लिए निकालना होगा तो वही हाँ, 64 400 हो जाएगा सर। हो जाएगा देन ना? मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक, जी। ठीक, ठीक फोर है। इन 200। हाँ, फोर तो हंड्रेड ये आ जाएगा आपका 400 ग्राम। राइट सर। अगला क्वेश्चन है। ए आएगा ए। हाँ, ए सही, क्यू मस्ट बाई ए सही है। यस। ए ए सही है। ए सही है। कंट्रोल की ही मस्ट लाइक डार्क ब्राउन कलर। फिर है अपना अगला क्वेश्चन। The combination of organic fraction of biodegradable components that remain after treatment and plastic is termed as। हमारा जो पाई चार्ट था उसमें जो कम थर्मल ट्रीटमेंट के लिए इनिशियली एक पाई चार्ट दिया था।
बायोलॉजिकल वॉलेटाइल सॉलिड्स का तो यहाँ पे सेंस भी बनता क्योंकि हम क्योंकि सर प्लास्टिक जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल है। हाँ, तो रेजिडुअल वॉलेटाइल सॉलिड्स होना चाहिए। सही आंसर होगा रेजिडुअल वॉलेटाइल सॉलिड्स होना चाहिए। ओके। सर रेजिडुअल भी नहीं होना चाहिए, वोलेटाइल तो एक्चुअली प्लास्टिक तो वोलेटाइल में आएगा नहीं ना। आप हाँ ये न- सर ये ये हमको अपना जो इनऑर्गेनिक सॉलिड ही लग रहा है। नहीं नहीं इसलिए सर कि इनऑर्गेनिक हम बोल रहे थे सर। इनऑर्गेनिक तो सीधे नहीं हो पाएगा, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा। इसमें जो नहीं अपना ये बोल रहा है जो सर ये बोल रहा है बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट आफ्टर ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट होने के बाद में भी जो रह जाता है, तो वो अच्छा वो भी लिखे इनऑर्गेनिक वो ट्रीटमेंट इनऑर्गेनिक के बाद थोड़ी तो नहीं, आपका इनऑर्गेनिक नहीं रह जाएगा ना। मतलब अपना जो रेजिडल्स, लिग्निन और हाँ जो रेजिड लिग्निन और वैसे उस टाइप का मटेरियल जो रहेगा। हाँ हाँ, तो ये इसमें अपने रेजिडल सॉलिड वॉलेटाइल सॉलिड जो पाई चार्ट आप जाके देखेंगे अगर फिर से जो हाँ कंपोस्टिंग लिए हो तो उसमें रेजिडल सॉलिड्स में देखेंगे तो आपको प्लास्टिक भी दिखेगा। ओके। ठीक है, अपन लास्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज जनरली यूज टू चेक द सुटेबिलिटी ऑफ कंपोस्ट टू यूज अ फर्टिलाइजर? ये सीड जर्मिनेशन टेस्ट। सीड नंबर सीड 1। जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन, बिल्कुल। एमपीएन टेस्ट और प्लेट काउंट टेस्ट के बारे में पता है आपको? एमपीएन का सुना है, प्लेट काउंट तो सुना भी नहीं है। हाँ, पानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में कोई आप में से कोई जी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में अपना अगर आपको मतलब हाँ, अब उसमें एमपीएन टेस्ट होता है सर। हाँ हाँ हाँ, मोस्ट 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 प्रोबेबल नंबर, पोर्टेबल नंबर। हाँ मोस्ट और ये प्रोबेबल प्लेट नंबर, काउंट जो है बैक्टीरिया के हाँ काउंट के लिए करते हैं, प्लेट काउंट बिल्कुल जो बिल्कुल। पैथोजन अगर जब आपको पता लगाना है, कोलाई और ये जब हम इकोलाई, करते हैं ना सर उसको। हाँ हाँ इकोलाई, जी हाँ इकोलाई को एज ए सीवेज का इक्विवेलेंट लेते हैं। कंटामिनेशन चेक करते हैं उसमें। जी 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 जी। ठीक है सर, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर अपन बंद करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरेशन मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज टू एरेट कंपोस्ट ड्यूरिंग विंटर कंपोस्टिंग? रेगुलर टर्निंग। रेगुलर रेगुलर टर्निंग सही है। हाँ। ठीक है सर, आज यहीं पर बंद करता हूँ, और ठीक काफ़ी ठीक। सारे क्वेश्चन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक सर, सर मत बोलिए, मैं स्टूडेंट ही हूँ, दिव्यांशु नाम है, दिव्यांशु बोलिए, बोल लिया करिए मुझे। सर वो नहीं हूँ सर, सर ब्रजेश सर ही हैं। मैं स्टूडेंट ही हूँ सर। नो प्रॉब्लम्स। पर जो सिखा रहा है वो सर है, सर चाहे कोई भी हो। अरे सर सर ऑन कुछ ऑन बिहाफ ऑफ ब्रजेश सर, मतलब आप कर रहे हैं ना काम सर, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं। रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ठीक ग्रेट है सर, रिक्वेस्ट मैं टू यू सर। ठीक है सर, मैं या बंद करता हूँ। हाँ हाँ ठीक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, अगले हफ्ते मिलते हैं सर। हाँ श्योर सर। ओके बाय। बाय बाय।